You are listening to Season 2 of In Pursuit of Excellence with Nosheen, dedicated to freelancing. How to start working from home as a freelancer, build your freelancing business, and scale it to multiple streams of income. For more information, go to nosheenkhan.com/learn. Hello everyone. I hope कि मेरी आवाज आ रही है क्योंकि ये चीज मैंने चेक नहीं की. Too many things, way too many things. Hopefully, yeah. It seems like everything's working. Okay. I know मैंने कहा था कि मैं वीकेंड को लाइव नहीं करूंगी, लेकिन जब 100 लाइव का चैलेंज हो तो फिर मैं दिन क्या देखूं और टाइम क्या देखूं और मौका और मुनासबत whatever, it all becomes irrelevant. Okay. मुझे 100 लाइव चैलेंज कबूल मुझे कबूल है. मैंने अपने आप को चैलेंज किया है. So that is what I'm going to do regardless of what happens. ये मैं इस वक्त इसलिए लाइव आई because I wanted to discuss something. I wanted to tell you something. अभी कुछ ही दिन हुए हैं जो मैंने लाइव शुरू किया है. And those who don't know, I could not come live for years. सालों के हिसाब से मुझसे नहीं हो पा रहा था. अभी कुछ दिन ही हुए हैं. Okay, so everybody, अस्सलाम वालेकुम, welcome, hello, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं. If you are, watching it live, please comment #live. If you're going to be watching a replay later, so comment #replay. और मेरी आपके लिए भी ये टिप है कि जब भी आप कुछ करें, उसका रिजल्ट एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो आप कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, हर चीज को एनालाइज करना ताकि पता चले व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग. ओके, बगैर एनालाइज किए अगर आप कोई काम करते रहोगे, सो गेस व्हाट, मे बी you're doing it wrong and now you're doing it wrong permanently. That's why it's very important. So मेरे लिए भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन जो है वो लाइव देखता है और कौन रीप्ले देखता है. इसको मैं बाद में फिर रिजल्ट एनालाइज करूंगी. एंड ऑफ कोर्स आई विल शो यू. सो माय पॉइंट इज, एंड द टिप इज फॉर यू इज, व्हाटएवर यू आर डूइंग, मेक श्योर एवरी फ्यू डेज, एक हफ्ता, सांस मेरा चढ़ा एक महीना, उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करें. tweak it, see what's working, see what's not working. For example, आपकी एक फिजिकल बिजनेस का शॉप है. अगर आप 9 बजे शॉप खोलते हैं तो आप 8 बजे शॉप खोल के कुछ अर्सा देखें क्या फर्क पड़ता है. क्लोजिंग आप अगर 10 बजे करते हैं, 11 बजे करके देखें कि क्या फर्क पड़ता है. सेम थिंग विद गो अर्लियर. अगर आप 9 बजे अपना शॉप खोलते हैं, try doing it at 11 a.m. And then try closing it early. That's just an example. For example, आप लाइव आ रहे हैं या आपका यूट्यूब चैनल है, किसी टाइम पर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, ट्राई डूइंग इट फॉर एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2 weeks, एक महीना, एंड देन एनालाइज. आप एनालाइज करें व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. आपको नहीं समझ आएगी कि आप नेक्स्ट लेवल पर जा भी रहे हो या बिल्कुल ही उल्टी सिंध में जा रहे हो, or whether you're making progress or not. Maybe you're doing something totally wrong and you still continue doing it without analyzing it. That's why it's important. Okay, so ये भी हो गया. जिनको नहीं पता 100 live का, this is only my live number 3. ठीक है, 97 अभी रहते हैं. I kid you not, मैं जिस चीज को इतने ज्यादा अरसे से इग्नोर कर रही थी, नहीं, इग्नोर इज नॉट द राइट वर्ड, आई वाज स्केयर्ड. आई वाज फियरिंग दिस. मैं नहीं कर सक रही थी. आई जस्ट वांट टू कम ऑनलाइन एंड टेल देम, आप जिस चीज से भी आप डर रहे हो, जो काम भी आप करने से डर रहे हो, एक दफा स्टार्ट करके तो देखो. I am going to tell you, पिछले 4 दिनों से जब से मैं लाइव कर रही हूँ, हालांकि लाइव था about doing live, online videos. You have no idea.
मैं जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कर रही हूँ, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। मैंने अचीव कर लिया समथिंग दैट आई वाज अफ्रेड टू डू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, दैट आई कुड नॉट डू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मैंने अचीव कर लिया, ठीक है? उसका जो असर था द होल डे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इससे जो मुझ में एक एनर्जी आ गई कि ओह माय गॉड, आई अचीव्ड समथिंग दैट आई वाज सो अफ्रेड टू डू, राइट? आई अचीव्ड समथिंग। उसके बाद मैं अचीव करती ही गई। उसके बाद मेरे जो भी काम थे, मैं उनको ऐसे-ऐसे करती गई। गेस व्हाट? क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम था, वो मैंने कर लिया। बाकी काम मुझे काम ही नहीं लग रहे थे। And my days are so productive. It's unbelievable. So जो भी आप करने से घबरा रहे हैं, please just start. अभी मुझे और आपको कोई जानता नहीं है, तो खूब ज़्यादा गलतियाँ भी कर लें, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कल को जब हम उस चीज़ के माहिर हो जाएँगे, we'll have this added confidence. We'll have this extra energy. We will have this productivity, this positivity. इतने उसके फायदे हैं just because you got one thing done in the day. वो मैं कोट तो खैर मैं इस वक्त नहीं कर सकती because I don't know who it was, but एक बहुत बहुत फेमस सा एक saying है कि सुबह उठो तो अपना बेड बना लो, बिस्तर बना लो। कहने को एक बहुत छोटा सा काम है। अब मुझे समझ आई कि वो क्यों कहते थे। बिस्तर बना लिया ना, इंस्टेंटली आपके दिमाग को पता चला कि भाई आपने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई। Whenever you feel that sense of achievement, you get into that mode of achieving things. उसके बाद आप कहते हो चलो ये भी निपटा लूं, ये भी निपटा लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, because guess what? You started your day right by achieving something. Be it as small as making your bed. So please, अगर आप वजन लूज करना चाह रहे हैं, वजन मैं भी आपके साथ शामिल हूं उसमें। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई स्पोर्ट है, जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं ना, उनकी जो कोशिशें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो उनको आप ब्रेक इट डाउन करें एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो जस्ट स्टार्ट। सिर्फ स्टार्ट करने से जो आपको फर्क महसूस होगा, बाकी की जर्नी इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतने आपको कोई रुकावट ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, दैट यू कुड नॉट जस्ट गेट योरसेल्फ टू स्टार्ट, यू जस्ट कुड नॉट स्टार्ट। मेरे साथ तो यही हुआ। तो जब से मैंने लाइफ शुरू किया, कोई मसला ही नहीं है जी, ये करना है I'll do it, ये करना है ये भी हो गया। ऐसे एक एनर्जी आ गई है and I'm ready, I can do anything right now. तो just go ahead, get started. First step, second step, third step, शुरू के दिन they will be messy. Messy से मुझे याद आया कि पहले दिन में कुछ मसला था, दूसरे दिन तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, आज तीसरा दिन है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। बताने का मकसद ये है कि जब आपने ठान ली होती है ना, और जब आपने ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया होता कुछ, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट, राइट? सो मैंने कहा I'll just go, I'll start, record for 5 minutes, I'll be back, चाय पी लूंगी, ठीक हो जाएगा, गोली खा लूंगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन discipline is when you keep doing the things that you even don't want to do. That's when you start seeing results. That's when you start growing. That's when you start going to the next level. जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो आगे तो फिर बात ही छोड़ देना हम। सो आज का लेसन या इस लाइव सेशन का छोटी सी टिप, if you've been meaning to start something but you're afraid to fail, afraid to make mistakes, afraid कि आपका मजाक उड़ेगा, afraid कि लोग क्या कहेंगे, afraid कि I'm not worthy enough, I'm not good enough, just start. I'm with you. मैं आपके साथ हूँ। अगर आपने 2020 के खत्म होने से पहले कुछ अचीव करना है तो let me know in the comments what that's going to be. मैंने तो 100 live करने हैं. That's my goal. So comment with hashtag before 2020 ends.
and let's see. I'm with you. Let's do this together. I'm with you. Let's start. Let's grow. Let's go to the next level. अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है 2020 के उसमें बहुत कुछ महीने ही है and we can do this. अपने लिए कोई चैलेंज बनाएं. मेरा 100 का है, मेरा 100 लाइव का चैलेंज है, आपका कुछ और चैलेंज होगा, whatever it is. It doesn't have to be live, of course. That's for me. So please make sure you just start. I want to make sure कि हर session में कुछ ना कुछ आपको value provide हो. So I'm gonna try to make these sessions short, but you have to bear with me. I am new at this. मैंने अभी start किया, तो मुझे पहले दिन से expert मैं नहीं बन सकती इसकी. So you have to be patient with me, and I have to be patient with myself. एक रातों रात कुछ भी नहीं होता है. अगर मुझे एक एक्सपर्ट लेवल का लाइव वो बनना है, तो उसके लिए जो मुझे एवरी डे थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, which is coming live every day, तो वो मैं करूंगी तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जा पाऊंगी. All right, so that was it. Take good care. Have a good night wherever you are, and I'll see you in the next live. I'm not going to say I'll see you tomorrow because क्या पता मैं next live कुछ घंटे बाद ही कर लूं. You just don't know. अपने लिए गोल सिंपल रखें. मैं अगर ये गोल रखूं कि लाइव 100 करना है, लेकिन इतने बजे करना है, ये भी हो, सूरज भी निकला हो, ये इस किस्म का हो, मतलब that's irrelevant. मैंने गोल को सिंप्लीफाई किया है कि 100 लाइव्स करने हैं. तो अब वो मैं एक दिन में 4 करूं या 4 दिन में 1 करूं, it doesn't matter. ठीक है? सो आप भी अपने गोल को सिंप्लीफाई करके just take the first step. Until next live, take care. Thank you for listening to the season 2 of In Pursuit of Excellence with Nosheen. If you are new to my podcast, I invite you to join me in this journey of creating your dream laptop lifestyle by subscribing. You can find me on almost every podcast directory. Just look up In Pursuit of Excellence with Nosheen or go to nosheenkhan.com. Take control of your life by start taking action. See you on the inside.